Assalamu alaikum and welcome learners. Today I am going to share with you the most important topic, that is Précis Writing. This topic is not only important for the undergraduate, graduate, masters and even for the competitive classes. So let's discuss about it. My points of discussion are: what is a Précis, difference between paraphrasing, summarizing and précising, rules to make a Précis, procedure of Précis writing, and in the end I'll share with you some examples. First we'll look at the word Précis. This word is commonly mispronounced. Some students pronounce it as Precis, Precis, so all these are incorrect. The correct pronunciation for this word is Précis. So the word Précis has French origin that means a summary. A Précis is the gist of a passage expressed in as few words as possible. लफ्ज़ प्रेसी फ्रांसीसी ज़ुबान से अख़ज़ किया गया है जिसके मानी समरी के हैं। प्रेसी उस मुख्तसर तहरीर का नाम है कि जिसमें हम एक पैराग्राफ को कम से कम मुमकिन अल्फाज में अहम तरीन पॉइंट्स के साथ बयान करते हैं। उर्दू में हम इसे तलख़ीस निगारी भी कह सकते हैं। A précis should give all essential points so that anyone reading it will be able to understand the main idea expressed in the original text. प्रेसी में तमाम अहम नुकात का होना इंतहाई ज़रूरी है ताकि पढ़ने वाले को ये पता चल सके कि पैराग्राफ का सबसे मरकज़ी नुक्ता या मरकज़ी ख्याल क्या है। So let's see what is the difference between précising, paraphrasing and summarizing. Paraphrasing. When we paraphrase, we retell the story in our own words. Here we give all the details. In paraphrasing, we state the points of a passage line by line. जब कभी हम पैराफ्रेज करते हैं, हम कहानी को अपने अल्फाज में हूबहू बयान करते हैं और यहाँ हम तमाम तर तफसीलात का जिक्र करते हैं और हम लाइन बाय लाइन चलते हैं। Summarizing. In summarizing, we significantly shorten a piece in our own words, touching on the main points of the passage. A summary restates the author's main ideas. Summarize करते हुए भी हम अपनी तहरीर को मुख्तसर रखते हैं, अपने अल्फाज में लिखते हैं और राइटर का बयान करदा जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन आइडियाज़ हैं, उनको ज़ेर बहस लाते हैं। Now what is précising? A précis on the other hand is always shorter than the original text, 1/3 of it. It should express only the main theme as briefly as possible. Précis writing में हम पैराग्राफ को 1/3 कर देते हैं और उसके अंदर मेन पॉइंट्स को या मरकज़ी ख्याल को कम से कम मुमकिन अल्फाज में बयान करते हैं। रूल्स टू मेक प्रेसी। प्रेसी बनाने के उसूल। A précis should consist of the main idea. प्रेसी को मरकज़ी ख्याल पर मबनी होना चाहिए। The précis writing should be 1/3 of the original passage. आपका पैराग्राफ असल पैराग्राफ का 1/3 यानी 1/3 होना चाहिए। Write from the third person point of view. आपकी तहरीर थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। यूज़ इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल कीजिए। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, तमाम सवालात को इंतहाई गौर से और एहतियात से पढ़िए। इफ़ यू आर राइटिंग एनीथिंग रिलेटेड टू हिस्ट्री और एनी हिस्टोरिकल डेटा, इट शुड बी रिटन इन द पास्ट टेंस। अगर आप तारीख़ या तारीख़ी मवाद से मुतल्लिक लिख रहे हैं तो इसे आप पास्ट टेंस में लिखेंगे। If you are asked to give the meaning of some words or phrases, explain them as clearly as possible. अगर आपसे कुछ अल्फाज के मानी का कहा गया है तो आपने उन अल्फाज को वाज़े तौर पर बयान करना है। Answer the questions in your own words. सवालों के जवाब देते हुए जहन में रखिएगा कि आपके अपने अल्फाज होने चाहिए। Removing the irrelevant data or sentences is very essential. प्रेसी करते वक्त आपने गैर ज़रूरी जुमले और मवाद को उसमें से हज़्फ़ कर देना है। ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। You can divide the paragraph into 2 or 3 parts. आप अपने पैराग्राफ को 2 या 3 हिस्सों में तकसीम करके प्रेसी कर सकते हैं। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। Give a short and appropriate title that reflects the subject matter of the passage. और उस पैराग्राफ का एक उन्वान तहरीर कर दीजिए ताकि उससे पूरे पैराग्राफ का आइडिया हो सके। प्रेसी राइटिंग में कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनसे आपको इज्तनाब करना है। नंबर 1, डू नॉट राइट फिगरेटिव एक्सप्रेशंस एंड डेट्स मेंशन्ड। आपने फिगरेटिव एक्सप्रेशंस जैसे कि सिमिलीज, मेटाफर्स और पर्सोनिफिकेशंस वगैरह इनका इस्तेमाल नहीं करना और तारीख़ों को भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। डो नॉट कॉपी द एग्जांपल्स एंड कोटेशंस। इसमें किसी किस्म की मिसालें और कोटेशंस आपको कॉपी करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। डो नॉट रिपीट द पॉइंट्स। जो पॉइंट्स या नुक्ते आप पहले से बयान कर चुके हैं उन्हें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, दोहराइए मत।
Avoid long and complex sentences. तवील और पेचीदा जुमलों से परहेज कीजिए. Do not use exclamatory, interrogative, imperative sentences. अपनी तहरीर में आपने exclamatory, interrogative और imperative sentences को भी नहीं mention करना. Do not add your own comments. तहरीर में अपने ज़ाती comments देने से गुरेज करें. Do not copy the exact lines. Lines को या जुमलों को हूबहू कॉपी मत कीजिए. Here are some hints about Précis. Look at the first sentence. Doctors, teachers, engineers, lawyers and businessmen were present there. So it's a sentence. If we want to make it short, so we can write instead of it, people of different professions were there. There is another example. Saad wants to spend less on every occasion. So we can write Saad is a miser. Look at the third example. When clouds of despair surround us and we feel darkness everywhere, can be replaced with when we are disappointed. So let's discuss about Précis writing procedure. Step 1. Read the passage thoroughly many times. The first task of the Précis writer is to understand the complete work well enough to abstract the main idea of the text. Underline important terms. Step number 1 पर पैराग्राफ को बार बार अच्छी तरह पढ़िए और Précis राइटर के लिए ये ज़रूरी है कि वो तमाम पैराग्राफ को अच्छे तरीके से समझे ताकि वो फिर उसको इख्तिसार के साथ बयान करने के काबिल हो और उसको उसके मेन आइडिया के बारे में अच्छी तरह समझ आ जाए. उसके बाद उसको चाहिए कि वो उसके अहम नुकात को, उसके अहम टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरलाइन कर ले. स्टेप नंबर 2. Write an initial summary of the passage and put the ideas and concepts in sequence as presented by the author in the original. स्टेप नंबर 2 पर एक समरी लिखिए जिसमें आपने अहम नुकात को बयान करना है और उसको बिल्कुल उन्हीं तरतीब के साथ बयान करना है जैसे कि राइटर ने ओरिजिनल टेक्स्ट में बयान किया था. स्टेप 3. Carefully focus the author's arguments or main idea. Check whether your writing covers that idea in a logical form. Reduce your initial abstract further by omitting irrelevant details that are not necessary to the essential idea of the passage. स्टेप 3 पर आपको क्या करना है, आपको राइटर के जो मेन आइडिया है या उसके जो दलाइल हैं उस पर फोकस करना है और इस बात को चेक करना है कि क्या आपने उन आइडियाज़ को कवर कर लिया है और उनको क्या आपने एक लॉजिकल सीक्वेंस में बयान किया है. गैर ज़रूरी मवाद और ऐसी बातें जो पैराग्राफ के लिए लाजमी नहीं हैं आप उन्हें निकाल सकते हैं. Step 4. Replace words and phrases specifically used by the author with suitable synonyms. Step 4 पर आपको ये करना है कि आपको राइटर के बयान करदा अल्फाज और फ्रेजेस को तब्दील करना है मुतरादिफात के साथ. Step 5. Read and reread your Précis to ensure that you have produced minimum words necessary to express the idea of the passage. Check to make sure the words and phrases used are in your own words. Step 5 पर यानी कि आखिरी दर्जे पर आपने बार बार Précis को पढ़ना है ताकि आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकें कि आपने अहम नुकात को कम से कम मुमकिन अल्फाज में बयान कर दिया है और उसके बाद आपको ये देखना है कि क्या उसमें बयान करदा जुमले आपके अपने हैं. लेट्स व्यू सम एग्जाम्पल्स. हियर इज़ अ पैसेज इन फ्रंट ऑफ अस. टीचिंग इज़ द नोबलेस्ट ऑफ प्रोफेशंस. अ टीचर हैज़ अ सीक्रेट ड्यूटी टू परफॉर्म. It is he on whom rests the responsibility of molding the character of young children. Apart from developing their intellect, he can inculcate in them qualities of good citizenship, remaining neat and clean, talking decently and sitting properly. These virtues are not easy to imbibe. Only he who himself leads a life of simplicity, purity and rigid discipline can successfully cultivate these habits in his pupils. Besides, a teacher always remains young. He may grow old in age, but not in spite. Perpetual contact with budding youths keeps him happy and cheerful. There are moments when domestic worries weighs heavily on his mind, but the delightful company of innocent children makes him overcome his transient moods of despair. Look at the paragraph carefully. I have highlighted some main points. After highlighting main points, we can make a Précis. Now let's have a look. Teaching is the virtuous profession. A teacher himself leading a simple, pure and disciplined life can shape the character of the young children and make them neat and well-mannered citizens. Besides, he remains ever young, forgetting his own domestic worries in the constant company of the young. And the possible title can be Teaching or Teaching a Noble Profession. Let's look at another example. Here is another passage. A subject of great debate has been the nature of dreams that people experience.
Dreams can range from mundane to the fantastic. They can create emotions like anxiety, joy, fear, anger, etc. in the dreamer. Dreamers often feel that the experience in their dreams is very real. It is common for people to have recurring dreams. Some people have recurring dreams of falling, flying, or being chased. Nightmares are also common and often occur among children and adolescents. Nightmares may be a result of unresolved conflict or anxiety. Many theories have been put forth to explain why dreams occur. One of the theories is that dreams are merely reproduction of incomplete thoughts or events experienced in the day. Another theory is that dreams are representation of our desires and fears. It has also been propagated that our dreams are populated with universal symbols that may be recognizable across a myriad of culture. Sometimes dreams have been reported to certain warnings or messages about the immediate future. It has also been suggested that dreams can be used for solving problems and arriving at solutions. Many people keep dream journals. They record their dreams on daily basis. Dream journals may be maintained as a hobby or gain a better understanding of dreams and consequently oneself. Carl Jung, the famous psychologist, maintained a dream journal known as Red Book. Now look at the main highlighted points. Now here is the Précis. People dream differently. They experience various emotions such as anxiety, joy, fear, etc. Often dreamers believe their dreams as real. Many people have recurring dreams. Nightmares are also commonly experienced. They may be due to unsettled problems. Dreams may be the outcome of one's thoughts like fears, desires, and predictions about the future. Dream may even be helpful in solving problems. Carl Jung, the famous psychologist, was known for keeping a dream journal. The title of this passage can be Dreams, What We Dream and Nature of Dreams. So अजीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का लेक्चर आपके लिए मुफीद रहा होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए मौजू के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।